A very good afternoon, class. So, बच्चे लोग, as you all are aware, we have already started with our chapter 4, secretarial practice, documents related to the formation of a company. So, up till now, class, if you are going through the videos, we have already finished two types of documents, that is memorandum of association and articles of association, which are the two important documents which are required at the time of incorporation of a company. Also, बच्चे लोग, last time we started with the topic prospectus, that is another important document which has to be issued by the public company when it thinks of collecting the capital from the public by issuing shares, debentures, etc. So last time we had seen what was the meaning of prospectus. When a public company is collecting capital by issuing shares to the public, it has to issue a document called as prospectus. It is a document which contains information about various aspects of the company and invites the investors to buy the securities offered by the company. The prospectus must contain true and factual disclosures as investors decide to invest based on the information given in the prospectus. तो बेसिकली बंदे प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करते, करेक्ट? जो भी आपने दिया है, मेंशन किया है, उसके बेसिस पे ही दे विल बी बाइंग, बिकॉज उनके लिए वही इंफॉर्मेशन ट्रू है एंड दे स्टार्ट बिलीविंग व्हाट यू हैव रिटन इन द प्रोस्पेक्टस. So when you are issuing it, see to it that you disclose proper and correct information in the prospectus. Also, we have seen the definition last time. तो quickly देख लेते हैं definition of prospectus as per section 2 of 70 of Companies Act 2013. Any document described or issued as a prospectus and which includes a red herring prospectus or a shelf prospectus, circular advertisement or any other document inviting the offers from the public for the subscription or purchase of any securities of body corporate. Also, last time we had finished with what were the different types of prospectus which are issued by a company. अब हर एक के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट यस, फटाक से ब्रश अप टाइप ऑफ थिंग वी कैन टेक. अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, अब्रिज्ड का मतलब होता है इन डिटेल, हर एक चीज डिटेल में दी होगी और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया होगा. सो इफ यू विल बी इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर प्रोस्पेक्टस आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो. तो मतलब बारीकियों से एक एक जो डिटेल दी होगी वो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में दी होती है. शेल्फ प्रोस्पेक्टस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस? नाउ शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब है एवरी टाइम, कुछ टाइम के बाद कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि हमें और पैसा उठाना है पब्लिक से, सो एवरी टाइम इट will can't issue a bridge ना, because उसका प्रिंटिंग का कॉस्ट लगता है, उसको बनाने में टाइम लगता है, it takes legal procedure, so it takes lot of time and effort. So shelf prospectus क्या होता है? Every time you are thinking to buy money from the public, money public से पैसा उठाना है, so at that time you can issue the self prospectus up till 1 year. एक साल के दौरान जितने भी बार आपको सब्सक्रिप्शन करवाना है पब्लिक से, for that you can issue shelf prospectus, and for that एक information memorandum करके फॉर्म होता है, वो फिल करके आपको हर बार ROC के पास रजिस्टर करवाना है. So there is no need to issue every time brief prospectus and spend lot of money on that. Red herring prospectus, which is considered as one of the most important prospectus, और उसको incomplete भी कहा जाता है, because it does not give you proper information about how much quantity of shares the company will be issuing and what will be its issue price. तो last time if you have gone through the video, तो आपने सुना होगा, और अगर नहीं देखा है तो please go through it. There was a special person who had come and who had explained you all with a proper example
कि क्या होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, आईपीओ क्या होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है. None other than Mr. Boss Baby had come and he had explained y'all. तो अगर नहीं देखा है रिक्वेस्ट y'all कि पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना. लेटर ऑफ ऑफर एंड ऑफर लेटर. तो याद है मैंने आपको लॉजिक सिखाया था इसको, गेटवे ऑफ इंडिया एंड इंडिया गेट जैसा याद रखो, ठीक है ना. गेटवे ऑफ इंडिया मतलब किधर है गेटवे ऑफ इंडिया? अपने बॉम्बे में, और इंडिया गेट दिल्ली कैपिटल. सो लेटर ऑफ ऑफर बेसिकली इज गिवन टू ऑल द शेयर होल्डर्स. मतलब कंपनी अगर पैसा उठाना चाहती है एंड इफ इट इज ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो वो क्या इशू करती है? लेटर ऑफ ऑफर. ऑफर इज ओपन टू एवरी शेयर होल्डर, जितने भी है दुनिया में, ओवरऑल जहां पे भी वो कंपनी के शेयर होल्डर्स है सबको मिलेगा. ऑफर लेटर कैपिटल सिटी इंडिया गेट, हर कोई अलाउड नहीं होगा, मतलब कैपिटल सिटी है ना, तो ऑफर लेटर मतलब मिनिमम लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को ही ऑफर किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज ऑफर लेटर. ओके, सो वी हैड कवर्ड इन डिटेल इन ऑलरेडी पिछला स्लाइड, तो अपन ज्यादा टाइम उसमें अभी वेस्ट नहीं करेंगे. आते हैं आज के टॉपिक पे. सो टॉपिक फॉर टुडे इज कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस में व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी देयर और इट हैज, that we'll be studying today. So let's begin without wasting much time. What contents should be there in a prospectus? So the very first thing, a prospectus must contain information and reports. So as per the Companies Act, prospectus must contain information such as name of the company, uska full registered office address with the phone numbers, email address, nature, number and price of securities being offered, details of the lead merchant banker, registrar to the issue, names of stock exchange where the shares will be listed, a clause on general risk, date of opening and closing of issue, etc. It must also have reports on financial information. SEBI specifies the contents to be included in the prospectus. So basically prospectus क्या है? कंपनी का इंट्रोडक्शन है. So when you are giving the company's introduction, A to Z everything should be included. So what all things should be there? Name of the company, address, phone numbers, email address, कितने shares issue कर रही है, at what price it is offering, कब कौन से डेट से ये सब्सक्रिप्शन पीरियड चालू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है. There are two new words given, lead merchant banker and registrar to the issue, जिसका मीनिंग अब आएगा आपके सामने in the next slide. So all these things should be mentioned in the prospectus. These all things should be given in the prospectus. That is number one, reports and information. Now, as I told you, we'll see the meaning of lead merchant bankers. Lead merchant bankers are nothing but financial institution. Naam mein meaning hai na, these are the banks which are appointed or which helps the company, which guides the company during the time of issue of shares. तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आना है, एप्लीकेशन मनी आना है, उस जो भी अकाउंट में आएगा, सो कंपनी हैज टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. सो उस बैंक अकाउंट के जो भी मैनेजर्स होंगे, जो भी मैनेज करेगा ये एंटायर प्रोसेस को, उसको बोला जाता है लीड मर्चेंट बैंकर्स. बिकॉज द मनी विल नॉट बी ट्रांसफर टू द कंपनी, ये सब किस में जाएगा? एक बैंक अकाउंट में जाएगा. So all that procedure is being handled by which financial institutions? They are called as lead merchant bankers. Registrar to the issue का मतलब होता है these are the agents which are appointed by the company to collect the application forms and money, maintain records of the investors, etc. So company के पास इतना टाइम नहीं है ना, वेली नहीं बैठी है कि ये सब करेगी. So it appoints agents जो ये सब काम करेंगे. So उनको बोलते हैं registrar to the issue. Okay, so I hope you are clear with the first point of contents of prospectus. Moving forward and continuing with the next topic of contents of prospectus, reports, information के बाद there should be a declaration. Now declaration का मतलब है
you as students also fill the declaration form ना, जिसमें आप आपका full details देते हो, आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, phone numbers, date of birth, everything is mentioned. And last में एक line लिखी होती है ना, I hereby declare that the above furnished information is true. सच भरी है वैसा. So there should be a declaration by the company saying that all the provisions of the Companies Act have been complied with and that the prospectus does not contain anything contrary to the provisions of the Companies Act, Securities Contracts Regulation Act of 1956 and SEBI Act 1992 and the rules and regulations made thereunder. The same way company भी एक declaration file करना चाहिए कि whatever information you will be reading in the prospectus वो सही है, it is true and हमने जो भी rules regulations है, जितने भी act के तहत ये होता है वो हमने सब follow किया है. So there's nothing against Companies Act या Securities Contract Act या SEBI Act. So every rules and regulation has been paid attention to when we were conducting or making this prospectus. Okay, so are you all clear with this part as well? All right. Moving forward with the next point. The next point which is given in your text is this one. Statement of an expert. So as I told you, prospectus को बनाना कोई आसान काम नहीं है. It's a legal process. तो आपको काफी लोगों की expert advice लगेगी. Correct? So you need somebody from that particular background जो बोल सके कि हाँ भाई legally जो भी इसमें लिखा है, whatever legal terms are used, it's all true and up to the mark. So a prospectus may contain a statement made by the experts. अभी experts कौन होते हैं? Like a CS, company secretary, CA, chartered accountant, cost accountant, engineer, valuer, etc. relating that they have looked into the matter अच्छे से. The expert has to give written consent to issue the prospectus. Now you can issue the prospectus. ऐसा writing में उसको देना चाहिए कि अभी आप issue कर सकते हो और public के लिए मतलब दे सकते हैं public को ऐसा. Apart from this, any other matter as may be prescribed by the Companies Act. तो ये सारी चीजें एक prospectus में होनी जरूरी है. So I hope you all are clear with this topic, class. Okay. Now moving on to the next topic, that is statutory requirements in relation to prospectus. Statutory मतलब compulsory, permitted by law. हमने देखा था ना, statutory means law के हिसाब से compulsory क्या-क्या चीजें होनी चाहिए. So number one, draft prospectus to be made public. A draft prospectus filed with SEBI by the company should be made available to the public and to the stock exchanges where the company wants to list its shares. तो जो prospectus public को issue किया जाने वाला है, उसका draft माने copy, किस-किस के पास होनी चाहिए? एक तो SEBI के पास, ठीक है? That is Securities and Exchange Board of India. And दूसरा stock exchange, जहाँ पे आपके companies के shares list होंगे. I told you ना, once IPO हो जाता है, once एक बार आपके कंपनी ने पब्लिक को पहली बार शेयर्स ऑफर कर दिए, उसके बाद आपकी कंपनी क्या हो जाती है? लिस्टेड. तो आप आपकी कंपनी के शेयर्स कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो? स्टॉक एक्सचेंज पे. सो दिस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस हैज टू बी शोन टू द पब्लिक, और जिसकी कॉपी किसके पास होती है? एक सेबी के पास और एक स्टॉक एक्सचेंज के पास. Next, whenever you are making any important document, signature चाहिए ना भाई बड़े लोगों का. So the prospectus which is made, on that there should be sign of the directors. So prospectus must be signed by all the directors or by the duly authorized attorney. So board of directors का sign होना बहुत जरूरी है. Moving forward to the next requirement, which is compulsory by law, is registration of prospectus. So everything, if you are doing it public, तो आपको register तो करना पड़ेगा. So a copy of the prospectus has to be or must be registered with the ROC before issuing it to the public. Dating of prospectus, कब बना? A prospectus has to be dated. बर्थडे मनाते हो ना, एक स्पेसिफिक डेट पे मनाते हो,
तो सिमिलरली प्रोस्पेक्टस भी कब बना, डेट होना चाहिए. The date on the prospectus is considered as the date of publication of the prospectus. Issuing prospectus to the public. Prospectus must be issued to the public within 90 days from the date of registering a copy with the ROC. तो मतलब अगर आप लोग ने प्रोस्पेक्टस 20 दिसंबर को ROC के पास फाइल करवाया है तो 20 दिसंबर के बाद से 90 डेज मीन्स 3 महीना, दैट इज 20 मार्च तक पब्लिक के पास पहुंच जाना चाहिए. सो 20 दिसंबर टू 20 जैन 1 महीना, 20 जैन टू 20 फेब 2 महीना, 20 फेब टू 20 मार्च 3 महीना. So within 3 months it should be available to the public once it is filed with the ROC. Clear with all the 5 statutory requirements? All right. Moving forward, penalty for non-compliance. अब मैं बार बार रूल्स रेगुलेशंस जो बोल रही हूं, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी. इफ यू ब्रेक एनी लॉ पेनल्टी लगती है ना. बिना टिकट के ट्रैवल करोगे तो पेनल्टी लगेगी. ट्रैफिक जंप करोगे, सिग्नल जंप करोगे, ट्रैफिक सिग्नल, पावती कटती है. इन द सिमिलर मैनर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, है ना. So if a prospectus is issued in contravention of the above mentioned provision, तो क्या पेनल्टी लगेगी अगर जरा भी ऊपर वाले के अगेंस्ट गए तो. Number 1, the company shall be liable to pay a fine between 50,000 and 3 lakhs. तो 50,000 से 3 लाख के बीच का फाइन भरना पड़ेगा कंपनी को. Or every person who has knowingly involved in issuing such a prospectus will be punishable with imprisonment. जेल जाना पड़ेगा 3 सालों के लिए, और फाइन between 50,000 and 3 lakhs or both. तो या तो पैसा भरना पड़ेगा 50,000 से 3 लाख के बीच में, या जेल जाना पड़ेगा 3 साल के लिए, या दोनों भी हो सकता है. You have to pay the penalty as well as go to jail for 3 years. So that is why following the rules and regulations is a must, because public का मामला है भाई, public है, सब जानती है. तो जरा भी उल्लू बनाया तो तुम्हारी वाट लगेगी. Okay. Now look at this case study. A company stated in its prospectus that it has been making profits since the last 5 years. However, Mr. X, an investor, found out that 2 years back the company had not made any profit. The prospectus was filed with the ROC on 1st Jan 2017 and was issued to the public on 10th Feb 2018. तो एक कंपनी है जिसकी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि पिछले 5 साल से हम बहुत मुनाफा कमा रहे हैं. सो मिस्टर एक्स जिसने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, इसको पता लगा आफ्टर इन्वेस्टिंग कि कंपनी तो पिछले 2 साल से लॉस में जा रही है. ऑल्सो आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ था 1 जैन 2017 में, बट इट वाज मेड पब्लिक व्हेन 10th Feb 2018, next year. Now this kind of thing which happens, जो लोगों को गलत information देती है, this sort of thing is called as misstatement in prospectus. That means when you disclose misleading information, galat information, false information to the public, such kind of topic is called as misstatement. So class, this is our next topic, misstatement in prospectus. So kabhi what happens is, as the investors make their decision to invest based on the information given in the prospectus, care should be taken to ensure all the information should be accurate and no material fact should be omitted. An untrue statement or misstatement का मतलब क्या होता है?
The statement is misleading in form or content. जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, पिछले 5 साल से हम प्रॉफिट कर रहे हैं, but what was the actual truth? Last 2 years it was not making any profit. Where any inclusion of a statement or its omission is likely to mislead the reader. And prospectus was filed 2017 में. As we saw, date होना बहुत जरूरी है prospectus पे. And public को ये prospectus कब मिला? अगले साल 2018 में, which is also wrong, which is invalid. होता ही नहीं है ना ऐसा. We saw within 3 months public तक ये prospectus पहुंच जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ. If an investor has bought shares of a company based on a prospectus which had misleading information or suppressed material information, then he can take action against the company. तो बच्चे लोग, as we saw, ये केस जो मैंने आपके सामने रखा था, what did we see? Mr. X ने prospectus पढ़ के कंपनी के शेयर्स खरीदे थे. So now tell me class, can Mr. X state that there was a misstatement in the prospectus? Of course he can. So he can state that there was a misleading statement, and also he has got a right that he has bought the shares of the company and take action against the company. Because उसमें क्या हुआ है? Mislead किया गया था, जिस वजह से उसका नुकसान हुआ है. If there is any untrue or misstatements in the prospectus, the company and the persons responsible for issuing such prospectus will have to face the following liability. So अब क्या केस बन सकता है कंपनी पे एंड उसके लोगों पे? There can be 2 types of liability in case of misstatement. Number 1, civil liability, and number 2, criminal liability. What is civil liability? The company has to pay compensation for loss suffered by investor. पैसा भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, जितना भी लॉस सफर हुआ है मिस्टर एक्स को, उतना जुर्माना कंपनी को देना पड़ेगा. And what is criminal liability? The company or its officers will be fined or imprisoned or both. तो ये हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया था. या तो they have to pay compensation or they will be imprisoned and fined, or it can be both. So अपने case study में क्या हो सकता है? So in this particular case study, what can happen to Mr. X is he can ask for compensation. If he is not getting compensation, if found guilty, which are the 2 types of liability the company and the officers will face? One is civil, that is company को किसी भी कीमत पे Mr. X को compensation देना पड़ेगा for whatever loss he has suffered, or if not, they will be fined, imprisoned, or both. That can happen. All right, class. So I hope you all are clear with this chapter, and with this we come to an end of chapter 4, that is documents related to formation of a company, and the most important document, that was prospectus. So thank you so much class for your attention. If you feel that any concept is still not clear in your mind, please let me know in the comment section. Again, I request you, if you like the video, please do subscribe to the channel and share across the link with all your other friends as well. So thank you so much class for your attention and patient listening. I stop here for today. Stay tuned, keep watching, take care till we meet the next time for the next lecture. So thank you so much class. I stop here for today.